Asexual reproduction in today's class. So just look at the classification of the types of reproduction. If you look at the screen, types of reproduction में हम लोग को पता है कि there are two main types of reproduction. They are asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction का various types में first one fission, then budding, spore formation, regeneration, fragmentation, and vegetative propagation. And fission, there are two types of fission, binary fission and multiple fission. So in today's class, we will discuss all these topics one by one. First about fission, then budding, then spore formation, regeneration, fragmentation, and vegetative propagation. What are the two types of fission? If I ask you, they are binary fission and multiple fission. So you have to memorize these classification of types of reproduction, two main types. They are asexual and sexual reproduction. So first हम लोग डिस्कस करेंगे about asexual reproduction और types of reproduction में already we know there are two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Now what is asexual reproduction? When reproduction occurs without the fusion of gamete, ऐसा reproduction जिसमें gamete का fusion यानी fertilization नहीं होगा is asexual reproduction. Only a single parent is needed to produce new generation. एक ही parent चाहिए offspring produce करने के लिए. For example, आप ये example देखोगे तो ठीक से समझ जाओगे. ये एक unicellular organism, unicellular fungus, और ये है yeast. एक matured yeast cell में एक outgrowth develop होता है, कभी-कभी chain भी develop होता है. This outgrowth is called bud. As the bud is developing, the nucleus divides into two, and one of the daughter nuclei enters where? Into the bud. एक न्यूक्लियस डिवाइड होके दो बनेगा और एक उसमें से कहां चला गया? बड के अंदर. This bud gets detached from the parent cell, from the mother cell, and now one divides to produce two. Here, what happens? Only single parent is needed to produce new generation. New generation is produced with the help of single parent, and there is no fertilization, there is no fusion of gametes. Characteristics of asexual reproduction. A single individual is involved in this type of reproduction. Gametes are not formed. Fertilization of gametes is not required. Do you know what is the name of the product of fertilization of gamete? किसी को याद आ रहा है? Any one of you? Just try to memorize. And the term is zygote. There occurs only mitotic or a mitotic type of cell division. Meiosis does not occur. So in the first class, we already discussed about mitosis, amitosis, and meiosis, and we discussed that meiosis is a type of cell division that is responsible for gamete formation. So यहाँ तो gamete formation, fusion of gamete is not required, meiosis is not involved. Daughter organisms are genetically identical to the parents. तो यहाँ mixing of genes होता नहीं है, fertilization नहीं होता, इसीलिए offspring daughter organism parent के identical होता है. It is faster mode of reproduction compared to sexual reproduction. It is faster mode of reproduction. बहुत ज़्यादा offspring at a time and in बहुत कम time में produce हो सकता है. Different forms of asexual reproduction, they are fission, budding, spore formation, fragmentation, and vegetative propagation. And we are going to discuss in detail about all these types of fission. तो अगर आपको पूछा जाए some characteristics of asexual reproduction, क्या होता है asexual reproduction में? तो सबसे simple answer है asexual का मतलब one sex is involved, मतलब one parent is involved. There is no fertilization, there is no fusion of gamete. Faster mode of reproduction,
It is faster mode of reproduction, and daughter organisms are genetically identical to the parents. And different forms of asexual reproduction में क्या क्या है? Fission, budding, spore formation, fragmentation, regeneration is also there, and along with that, vegetative propagation. So these are the different forms of asexual reproduction. So now we can discuss about fission in detail. Types of asexual reproduction, forms of asexual reproduction में first one is fission. In this process, the organism simply divides or splits into two. Fission का मतलब होता है to split. The organism simply splits into two or more equal size part, or each part later on becomes a complete organism. So पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा दो या उससे ज्यादा पार्ट में, और हर एक पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. It is the simplest form of reproduction, is characterized by protista as well as monera group. Monera में बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में amoeba, paramecium. Fission can further be divided into two types. एक है एक से दो अगर बना तो बाइनरी फिशन, और एक ऑर्गेनिज्म से बहुत ऑफस्प्रिंग बना तो मल्टीपल फिशन. Fission can further be divided into two types depending upon whether the parent organism splits into two to form two new organism or more than two. और अगर दो होगा तो हम लोग को पता है क्या टर्म यूज करना है, बाइनरी फिशन. So first about binary fission. बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिशन का मतलब होता है टू स्प्लिट. A number of organisms reproduce simply splitting into two identical parts. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट एक एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. And a process called binary fission. The term binary means two, and the term fission means splitting. Each split part forms an independent daughter organism. In this form of reproduction, parent organism cannot exist. आप देखो पेरेंट्स का कुर्बानी हो गया इधर. पेरेंट स्प्लिट हो जाता है into two parts and each part behaves like an organism. लेकिन मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को दिखाया था बर्डिंग इन ईस्ट, उसमें पेरेंट का एग्जिस्टेंस होता है और एक बर्ड एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और यहाँ पेरेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. In this form of reproduction, parent organism cannot exist as the parent itself gets transformed into daughter organism. Parent itself gets transformed into daughter organism. So binary fission में binary क्यों बोला जाता है? Two, and fission to split. और बाइनरी फिशन का स्पेशलिटी ये है कि इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड, सभी सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ. लेकिन इसका न्यूक्लियस डिवाइड होते वक्त अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियस ये जो है पहले ये शेप लेता है, इट टेक्स द शेप ऑफ डम्बल, और थोड़ा साइटोप्लाज्म में भी क्लीवेज क्रिएट हो गया, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल कुछ ऐसा बन जाएगा. It takes the shape of dumbbell, and then it splits into two parts. साइटोप्लाज्म में और डिप्रेशन क्रिएट हो गया, और न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मैंने एक टर्म समझाया था आप लोग को फर्स्ट क्लास में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ट्राई टू मेमोराइज द टर्म. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. तो यहां न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एंड आफ्टर दैट cytoplasm divides, the organism divides into two parts, and each part will develop into individual organism. And division of cytoplasm is called cytokinesis. It's called what? Cytokinesis. So binary fission is a mode or the form of asexual reproduction in which one organism, especially unicellular organism, simply splits into two parts, and each part behave like an independent organism. Binary fission commonly seen in where? In amoeba, in bacteria. You can see binary fission. Now we'll discuss binary fission in amoeba, और एक special
unicellular organism, Leishmania, we'll discuss. तो अब तक ये टर्म हम लोग के क्लियर है, बाइनरी फिशन क्या होता है. Binary fission is a common mode of reproduction in unicellular organisms like amoeba, paramecium, euglena, yeast, bacteria, etc. And this type of reproduction occurs when the conditions of environment are favorable. बाइनरी फिशन होता है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में. ये फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब किस टाइप का कंडीशन, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल ह्यूमिडिटी, लाइक दैट. This type of reproduction occurs where the conditions of the environment are favorable for the growth and the development of organism. High rate of reproduction can be achieved through this method. ये method से ज़्यादा offspring कम time में produce होगा. It is a faster mode of reproduction, and during the process of binary fission, the nucleus of organism first divides into two, and then the cytoplasm also divides. पहले न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म, जो मैंने पहले समझाया आपको. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. द सेल फाइनली डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स. तो ये तो हम लोगों ने बात किया बैक्टीरिया या एमीबा में कैसे होता है. आप एमीबा में भी देख सकते हो कि पहले न्यूक्लियस इलॉन्गेट हुआ, देन न्यूक्लियस में थोड़ा डिप्रेशन ज्यादा हुआ यहाँ, देन न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड, साइटोप्लाज्म में भी डिप्रेशन क्रिएट हुआ, and then cytoplasm gets divided. In unicellular organism like Leishmania, ये स्पेशल केस डिस्कस किया आपका बुक में. In unicellular organism like Leishmania which causes काला जार, black fever, leishmaniasis. So Leishmania has more organization in their body. इनका body organization amoeba bacteria से थोड़ा डेवलप्ड है. उनमें एक whip like structure, एक लंबा hair like structure आप देख सकते हो. That whip like structure, उसके लिए एक टर्म है, आपको याद आ रहा है, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दैट पर्टिकुलर टर्म. वो टर्म है फ्लैजेला. ओके, छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीलिया. So in unicellular organism Leishmania which causes kala jar has more organization in their bodies. It has a whip-like structure at the end of the cell. In such organism, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. तो आप देखो इनमें बाइनरी फिशन जो है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, पर्टिकुलर वे में हो रहा है. आप देखना यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, और ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है ये भी दो में कन्वर्ट हो गया. एंड द डिवीजन ऑफ cell occurs in definite pattern. Now the cell divides to form two daughter organisms. In this way, binary fission occurs in Leishmania in a definite orientation. लेकिन amoeba bacteria में ऐसा कोई fixed orientation नहीं है. So we discussed binary fission. One organism, one unicellular organism simply divides to form two daughter organism. और बाइनरी फिशन होता है अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. नाउ व्हाट मल्टीपल फिशन. मल्टीपल मतलब मेनी एंड फिशन मतलब टू स्प्लिट. एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके अगर बहुत डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा देन इट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीपल फिशन. दिस टाइप ऑफ फिशन ऑकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म फेसेस अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर सुटेबल नहीं है, मीडियम सुटेबल नहीं है, ह्यूमिडिटी सुटेबल नहीं है. During this process, many new organisms are formed from a single unicellular forms like amoeba, plasmodium. Okay, plasmodium causes malaria. So amoeba, plasmodium under unfavorable environmental condition, इनमें देखा जाता है मल्टीपल फिशन. और ये मल्टीपल फिशन में होता क्या है ये समझो. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ये न्यूक्लियस, और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन ये अपने चारों तरफ डेवलप करेगा एक थिक कोट, और ये थिक कोट उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. इस थिक कोट को हम लोग बोलेंगे, दिस थिक कोट इज कॉल्ड सिस्ट. ओके, तो अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ बना लेगा एक थिक कोट, प्रोटेक्टिव कोट जिसको सिस्ट बोलेंगे. एंड देन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, दिस न्यूक्लियस कीप्स ऑन डिवाइडिंग टू फॉर्म मेनी
daughter nuclei. And each daughter nucleus is surrounded by a bit of cytoplasm and develops a thin membrane. मतलब अब ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म और एक मेम्ब्रेन डेवलप कर चुका है. ये एक ऑलमोस्ट एक सेल के जैसे बिहेव करेगा. एंड ये सब कुछ हो रहा है कौन सा कंडीशन में? अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. ऑल दीज आर हैपनिंग इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा? ये इनके चारों तरफ सिस्ट ऑलरेडी द थिक कोट. और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा, when the favorable condition returns, तो क्या होगा? देखो आप, ऐसा कुछ होगा. इसका जो थिक कोट है वो रैप्चर हो जाएगा and nuclei with cytoplasm will come out and each of these will grow into independent individual organism. The organisms during multiple fission forms a protective covering called cyst over the cells, and inside the cyst the nucleus divides many times to form large number of nuclei. Little amount of cytoplasm surrounds each daughter nucleus to form a large number of daughter cells. On the arrival, मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सराउंड होके बहुत सेल ही बन गया एक्चुअल में इनसाइड द सिस्ट. On arrival of the favorable condition, the cyst breaks up and the daughter cells formed inside the cyst get released. Each of them becomes a complete organism. In this way, unlike binary fission, large number of daughter organisms are produced at the same time from a single parent. It's called what? Multiple fission. This is a mode of asexual reproduction, and this specially takes place in unfavorable environmental condition. So we have just discussed about binary fission, multiple fission, and these are the two types of fission which are seen in lower unicellular organisms. So in this way, multiple fission takes place. And if you look at the next picture, you can easily understand about multiple fission. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये parent cell है. There is cyst formation. Cyst breaks in favorable condition, and each of these nucleus with cytoplasm will behave as cell and will grow into individual organism. So if I ask you name two unicellular organism in which multiple fission takes place in unfavorable environmental condition, answer amoeba and plasmodium. Now budding. Budding is a process in which new organism produced as an outgrowth of the parent organism. ये parent organism उसमें एक outgrowth develop होगा, that is called bud. Outgrowth धीरे धीरे parent organism जैसा shape लेगा, and then it get detached from the parent organism and it will be now an independent organism, daughter organism. During the process, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud. The bud then detaches off and moves ways on its own to lead an independent life. Your bud detach okay, it can live an independent life. The bud may split away from the parent as in case of Hydra. तो स्प्लिट होके अलग हो जाएगा as in case of Hydra, and जैसे ये अलग होगा it will behave like individual organism. एक parent organism से अब दो organism हो गया. This is reproduction. This method is called budding. This is asexual reproduction as one parent is involved. Yeast, which is unicellular non-green plant, reproduces by budding. Yeast reproduces by budding. Okay. ये रहा unicellular organism yeast. A bud appears outside the cell wall. आप देख सकते हो यहाँ, a bud is developed outside the cell wall. Bud is an outgrowth. The nucleus of the parent yeast cell divides into two. ये रहा nucleus. It divides to form two daughter nuclei. The nucleus of the parent cell, yeast cell, divides into two, and one of them moves into the bud. So दोनों में से एक चला गया कहाँ? Bud के अंदर.
The bud ultimately separates from the parent to form new daughter yeast cell. So this bud get detached and forms daughter yeast. Parent yeast भी survive कर रहा है यहाँ पे. The bud ultimately separates from the parent to form new daughter yeast, and sometimes budding occurs so rapidly in yeast that before being separated from the parent cell, the daughter yeast cell starts producing its own progeny through budding. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड डेवलप हो गया, बड डिटैच होने से पहले ही वो बडिंग स्टार्ट कर देता है. तो जो ऑलरेडी बड डेवलप हुआ है उसके साथ नया, फिर उसके साथ एक और नया बड, इस तरह क्या होगा, चेन ऑफ बर्ड्स विल बी फॉर्म्ड. और ये सभी बर्ड जब डिटैच हो गए एक साथ, बहुत डॉटर ईस्ट सेल प्रोड्यूस होगा. इन दिस वे अ चेन ऑफ ईस्ट सेल इज फॉर्म्ड. So chain of buds may be formed in case of yeast, or single bud may be formed in case of yeast. Or hydra में budding is, we have already discussed budding in hydra. So budding is a mode of asexual reproduction. It can be seen in hydra, it can be seen in yeast. और आप यहाँ budding in yeast देख सकते हो. This outgrowth is bud, nucleus divide हो गया, daughter nucleus, and sometimes chain of buds may be formed. Okay. Now we'll discuss another method of asexual reproduction, that is spore formation. Spores क्या होता है? Spores are unicellular bodies that are formed inside the bodies of some lower organism. और ये unicellular body उनका मल्टीप्लीकेशन में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म में हेल्प करेगा. स्पोर फॉर्मेशन in lower plants like algae, bacteria, fungi, etc., spore formation is a common form of asexual reproduction. Spores are unicellular bodies formed by cell division in the parent organism. Parent organism जैसे आप यहाँ देख सकते हो राइजोपस में, parent organism का एक स्पेशल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम. और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स आर डेवलप्ड. Having detached from the parent, and if the conditions are suitable, they germinate directly or indirectly into new individual. तो जब ये स्पोर्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होगा और अगर उनको सुटेबल मीडियम मिल गया जिन पे ये अगर फॉल होता है, दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल. Spores are generally very small and light and thereby easily dispersed by wind, water, and other animals. Insects may be there. Some have thick resistant walls which enable them to survive in unfavorable conditions. तो spores detach होने के बाद भी unfavorable environmental condition में survive कर पाएगा अगर उनके चारों तरफ क्या होगा, एक thick coat होगा, resistant wall होगा जैसे cyst, and they will be able to survive in unfavorable environmental conditions. So यहाँ पे जो एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ स्पोर फॉर्मेशन में, वो है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस और ब्रेड मोल्ड. ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस प्लांट राइजोपस, small rounded bulb like structures develop at the top of the erect hyphae. तो ये जो राइजोपस ब्रेड मोल्ड है उसका बॉडी फिलामेंटस है, और उसका फिलामेंटस बॉडी में कुछ इरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप होता है. एंड सच इरेक्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट, हाइफा प्लूरल में, सिंगुलर में हाइफे. ईच स्ट्रक्चर सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोरेंजिया. तो इनमें जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इरेक्ट स्ट्रक्चर में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, प्लूरल में स्पोरेंजिया, सिंगुलर में स्पोरेंजियम. And inside each sporangium, nucleus divides several times. तो इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा और वो अगेन विद लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से सराउंड होगा, मेम्ब्रेन डेवलप होगा, एक सेल के जैसे बिहेव करेगा. Each nucleus gets surrounded by little amount of cytoplasm to become a spore. Spores are unicellular bodies. A large number of spores are formed inside each sporangium. After some time, sporangium bursts and spores are released in the air. When these spores land on food or soil under favorable conditions, they germinate into
new individuals. They germinate into new individuals. Okay, and this method is called spore formation. So अगर आपको पूछा जाए, give one example of organism that reproduces by spore formation. Best example, a fungus, rhizopus, or bread mold. तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो ब्रेड मोल्ड एक्चुअल में दिखता कैसा है ब्रेड पे जब डेवलप हो जाता है. ओके, तो अगर आप ब्रेड का पीस को ओपन में रख दो 3-4 दिन के लिए विदाउट यूज किए हुए, रेफ्रिजरेशन में नहीं, देन यू कैन सी व्हाट formation of bread mold. Now another method of asexual reproduction we are going to discuss, and that method is fragmentation. So what happens in fragmentation? Fragmentation is divided into fragments or parts. So this is suppose an organism, filamentous organism with filament like body, and during fragmentation what happens, this organism simply divides into fragments or parts, and each part grows into independent organism. Each part grows into independent organism. So all the cells of this particular organism are similar, not that much of differentiation in body. मतलब बॉडी का सभी सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिमिलर सेल्स इन द बॉडी. दिस इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर सेल्स. डिफरेंशिएशन नहीं है, टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है. So fragmentation is generally considered a process of asexual reproduction. Sometimes an organism may be broken into 2 or more pieces. The organism may be broken into 2 or more pieces, and each fragment grows as complete organism. You can see here. It occurs in the organism with less differentiated body design. यहाँ पे होता है कि immediately after division, each part, each fragment will behave like an independent organism. बाद में growth होगा, लेकिन immediately after division, it behaves like independent organism. Among plants, Pyrogyra filamentous algae reproduces through this process. Animals like Hydra, Planaria, Tania, etc. occasionally exhibit this form of asexual reproduction. So, ये asexual reproduction कौन सा plant में generally देखा जाता है? It is Pyrogyra. यहाँ पे जो दिखाया हुआ आपको picture में, that is Pyrogyra. It divides into 2, और यहाँ पे आप chloroplast देख सकते हो sided. Animals like Hydra, Planaria, Tania. Planaria को flatworm भी बोला जाता है, Tania को tapeworm भी बोला जाता है. They exhibit this form of asexual reproduction, and this form is called fragmentation, that is divided into fragments, and each fragment immediately after division behaves like independent organism. ऐसा ही एक डिवीजन है रीजनरेशन. लेकिन बहुत स्टूडेंट को फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक जैसा लगता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. Regeneration, it has been observed experimentally if a hydra is cut into 2 or 3 pieces. एक हाइड्रा को 2 या 3 पीस में अगर डिवाइड किया जाए, जैसे ये वाला पार्ट में, the hydra is divided into 3 pieces. Each piece develops into a complete hydra by regenerating the lost part. Each part complete hydra बन गया, यहाँ देखो, और वो अपना लॉस्ट पार्ट को डेवलप भी किया है. जब तक ये अपना लॉस्ट पार्ट को डेवलप नहीं करता, तब तक वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे बिहेव नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल दिस पार्ट, ये पार्ट जब तक अपना अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन डेवलप नहीं करेगा, तब तक ये हाइड्रा जैसे बिहेव नहीं करेगा. तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर डिवीजन इट बिहेव्स, द ऑर्गेनिज्म, द पार्ट, द फ्रेगमेंट बिहेव्स लाइक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. लेकिन यहाँ द part will not behave like independent organism. So in planaria, it has been seen that after attaining a particular length, the body of the animal breaks up into 2 or 3 pieces or 3 parts on its own, and each part later on develops into complete animal. Regeneration is carried out by specialized cells. Okay, लेकिन fragmentation body का किसी भी सेल में हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वो सेल सिर्फ डिवाइड करके अपना ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा.
These cells proliferate to make large number of cells to make tissues. तो ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में ये डिफरेंस है कि रीजनरेशन उन ऑर्गेनिज्म में, उन लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें बॉडी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंशिएटेड है, मतलब उनका बॉडी का अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर. ओके, सो फ्रेगमेंटेशन एकदम सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और रीजनरेशन लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद स्लाइटली डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया. फर्स्ट वन we started with fission. Fission में हम लोग डिस्कस किया है बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया बडिंग और then spore formation in rhizobus facial example that we discussed, and then fragmentation, and the last one regeneration. These are the different modes of asexual reproduction that we have discussed so far in this video. Now we are going to discuss about differences between fragmentation and regeneration. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए. फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. फ्रेगमेंटेशन occurs in invertebrates. Invertebrates, lower multicellular organisms, lower multicellular animals, in plants also like Spirogyra. Regeneration occur in vertebrates as well as invertebrates. It is a method of asexual reproduction. It can be a reproduction method या इसका एक और यूज है फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, एज इन केस ऑफ लिजर्ड. आपने देखा होगा कि लिजर्ड का अगर टेल कट जाता है देन इट कैन रीजनरेट इट्स टेल अगेन. न्यूली फॉर्म पार्ट्स. नंबर 3, न्यूली फॉर्म पार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें न्यूली फॉर्म्ड पार्ट cannot develop into new organism अगर ये reproduction के लिए नहीं है. अगर regeneration is for reproduction, then only the part from the parent organism develop into new organism. If it is not for reproduction, the newly formed parts cannot grow into new organism. Then fragmentation, it occurs in organism with simple body organization, जहां body में differentiation, tissue differentiation कम होगा या ऑलमोस्ट नहीं होगा. एंड रीजनरेशन, इट ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा टिश्यू डिफरेंशिएशन, बॉडी का अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है. नो स्पेसिफिक सेल्स आर इन्वॉल्व. फ्रेगमेंटेशन में सभी सेल्स पार्ट ले सकता है. एंड रीजनरेशन, specific cell divide to form mass of cells which further differentiate to form different tissues. So we have discussed different types of or different forms of asexual reproduction, starting from fission. We have discussed up to regeneration, and in the next part of the video we will discuss spatially about vegetative propagation. Okay.